I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Hello everybody, this is Maruf Mahmood and I am Ayn and we are from English Hub. And in today's video, we have brought you something completely new. This time, we are not going to learn English with the help of a movie. Rather, we are going to learn it with a song. Yes, the song is Lemon Tree. Yes, the name of the song is Lemon Tree and it is sung by the band Fool's Garden. We're going to understand certain tenses. We're going to learn the use of preposition and we're going to learn the literary devices used in this song. It's a very simple yet very enjoyable song. Yes, अभी इसमें हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें शायर कहना क्या चाहता है, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि हम कौन सा टेंस यूज़ करें. एक्चुअली इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हैं, सिंपल जो है सेंटेंसेस या इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो हैं, टेंसेस जो हैं वो हम सीखेंगे, जिसमें है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो है तो किस स्टेंजा में फ्यूचर और किस में इन्होंने पास्ट और किस में इन्होंने फ्यूचर टेंस यूज़ किया है और किस में प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है. तो हम ये चेक करें, हम देखेंगे इसके साथ साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस और किस तरीके से ये इस सॉन्ग को लिखने का जब तरीका है मैडम वो हम भी बताएंगे कि किस तरीके से राइटिंग लिखी जाती है. Exactly, and we're going to learn the various aspects and how the words are used in certain connotations and collocations as well. Okay, so without further ado, let's jump into the video and learn English with the song. So before we start, watch this song. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Okay, so the first stanza of this song is actually introducing the setting, the character and the mood of the whole poem, the song I would say. So the first line starts off that I am sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing to do. I'm hanging around. I'm waiting for you, but nothing ever happens and I wonder. So basically in the first stanza, he is telling us that he is sitting in a very boring room, which means that his life, his all surroundings have become dull and grey and he is no longer interested in it. So madam, this basically means that the person is depressed. Yes. फर्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लेमन ट्री है, एक्चुअली चूँकि हम कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको पढ़ते हैं, तो कल्चर कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं, तो ये जो लेमन है ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका में ये होता है कि ये लोग लेमन को जो है कि ये सौर होता है, तुरश होता है, तो ये इसको ऐसा लेते हैं कि ये इनके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है. Basically lemon symbolizes the soreness of life, and there's a very famous quote as well, that when life gives you lemon, make lemonade. So basically lemonade is tasty whereas lemon is sour. So when life throws its problem on you, try to resolve those problems and enjoy the outcome. इसमें जो शायर है वो ये कहना चाहता है कि उसकी जो लवर है उसको छोड़ के गई हुई है और उसकी वो बहुत डल महसूस कर रहा है, लेथार्जिक महसूस कर रहा है और उसको डिप्रेस्ड है और वो उसका इंतज़ार भी कर रहा है और फिर वो उसको नहीं मिलती है, तो फिर वो कहता है कि अपना सारा उसमें अपनी फीलिंग्स बयान कर रहा है, डिप्रेशन फीलिंग्स बयान कर रहा है. Yes, exactly. So you see that they use the word rainy Sunday afternoon. So Sunday is basically an off day, and you know after Sunday comes Monday. So the afternoon of the Sunday is very lethargic, boring and lazy, and then there's rain. So again, like lemon, rain is symbolized in our country, in Pakistan, in our culture context. Rain is symbolized for happiness because we really get less rain over here, and usually we enjoy rain, especially in summer and spring. But in the foreign countries like UK and America, rain is considered as a symbol of sadness.
यस आप देखिए इसमें जो प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, आई एम सिटिंग हेयर इन द बोरिंग रूम। आई सब्जेक्ट और ये सारा आपको बताया गया कि आई एम जो है इसको हमने आई एम पढ़ना है, आई एम सिटिंग हेयर। तो इसमें उस जो आई एन जी का यूज़ हुआ है और ये आप इसके ज़रिए से देख सकते हैं कि एक ही जो सॉन्ग है उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यूज़ हुआ है। तो इसी तरह ही आप लोग जब कोई राइटिंग करते हैं तो उसमें तमाम बात ऐसी जब राइटिंग होती है तो उसमें तमाम एग्जिस्टिंग के साथ नेक्स्ट जो है फास्ट सिंपल टेंस है। तो आपके पास गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट वो आई है और गॉट जो है वो फास्ट सिंपल टेंस है। फिर जो है इसी स्टेंजा में वो कहते हैं टू हैंग अराउंड, ये फ्रेजल वर्ब है। ये हम इसको इनफॉर्मल यूज़ करते हैं और ये किसी जगह के लिए कहीं पे आप किसी का इंतज़ार करना चाहें तो कहीं पे आप स्टे कर रहे हैं तो उस Hang around basically means when you move around somewhere or when you're stuck between, you're not going anywhere and you're staying over there. So hanging around can also be used that when you're in the park and someone says that, hey, what are you doing here? So you can say, oh, nothing, I'm just hanging around, which means that I'm moving here and there, I'm just passing my time and I'm just wandering over here. So it can be used as a synonym for. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. So this is stanza number 2, and this stanza talks about the mental state of the narrator. Basically, when someone is telling you something in a song, in a poem, in a story, so that person is the narrator. And this song is written in first person perspective. And the mood of the poem is very dull, depressing, yet it has an optimism in it, a touch of optimism. So how is this touch of optimism present? So you can see that in the first line he says that he's driving his car away and too fast, which is a source of escapism. So what is escapism? It's a literary technique, and we usually do it in our normal routine. Whenever we're depressed, to change our thoughts, to change our point of view, we do certain activities that take away our intention and we try to do something positive. For example, when I'm depressed, the first thing I do is either paint or I write down my thoughts. That works as a mode of escapism for me. So madam, what is your medium of escapism when you're depressed? When I feel depressed, I do cooking. Okay, so she does cooking. I hope that you guys must do something different and you try to release out your pain and stress and anxiety. So kindly let us know about your stress relieving activities in the comments below. Okay, so then he says, I feel so lonely and I'm waiting for you. So he is lonely, he has no one around him, and he's waiting for his lover to come back, but she's not coming back, and he just wonders, and wonders means to think. He is very shocked and he is confused, he's perplexed that why isn't she coming back. Yes. तो पहला जो स्टेंजा था उसमें ये था कि बट नथिंग एवर हैपन्स, तो कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें पहले उससे बताया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी जो है फीलिंग्स क्या हैं, तो वो बोरिंग फील कर रहा है। फिर उसके बाद उससे बताया कि कुछ भी नहीं होने वाला, बट नथिंग एवर हैपन्स, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर उससे कहा कि फिर उसने क्या किया, कुछ किया। ये डिप्रेस मूड में था तो वो ड्राइविंग करने निकल गया, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं हो रहा था। उसने अपनी फीलिंग्स को थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म उसने यूज़ किया यहाँ पे, और उसने क्या किया, गाड़ी ली और वो ड्राइव करने चला गया। और फिर उसने उसको बहुत तेज़ चलाया और फिर उसके बाद वो बता रहा कि मैं बहुत दूर चला गया, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे ख्यालात है, जो गमज़दा ख्यालात है जो मेरे जहन में आ रहे हैं, तो उनसे वो छुटकारा चाह रहा था। उस छुटकारा पाने के लिए उसने वो गाड़ी ड्राइविंग की और फिर उसके बाद ताकि उसका ध्यान चला जाए। और कहता है कि मैं अकेला हूँ और तुम्हारा इंतज़ार, अपनी लवर का वो इंतज़ार कर रहा है, अपनी महबूबा का। और वो कहता है मैं अकेला हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला और मैं हैरान हूँ। वंडर यहाँ पे वर्ब है टू आस्क योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपनी विश को उसके बारे में जानना चाहता है। तो कहता है मैं हैरान कि मेरी ये विश क्यों नहीं पूरी हो रही। Yeah, like in the poem, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. So wonder means to think, to ask questions from yourself, like how can I think over it and all that.
अच्छा, और मैं चाह रहा था कि आई लाइक टू चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई वॉन्ट टू चेंज माई ओपिनियन, आई वॉन्ट टू चेंज माई थिंकिंग, ये ताकि मैं जो है अपने इस ख्यालात से छुटकारा पा सकूँ। I feel so अगेन फिर उन्होंने फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया, आई फील सो लोनली। Basically, present simple tense is used for the conditions that are happening with you at the moment or which are very true. So this is like I feel my lonely means that he's expressing his emotion. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. So chorus is basically the group of singers that sing along with the narrator of the song. Like there's one person who sings the whole poem, and then there is another one who sings, there are a group of people who sings a certain portion of it. If you have read the old English drama, it was complex, so you will come across it that it had chorus, the first, the narrator, and the same goes for many Shakespearean plays that they have chorus in it. So this stanza is particularly sung by a group of people of the band Fool's Garden. So in this one, he's Madam, why not we sing this one? For example, if we two sing together, for example, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky. Yeah, so basically this is this particular stanza refers to the word blue, blue sky. So blue is actually a notion in English language. If I say that I'm feeling blue today, I'm feeling blue means I'm sad. But here when he says that the blue, blue sky, so he has used two words, blue, blue sky, and blue sky refers to happiness. So you see, madam, how this one word which is commonly used for color changes its meaning when it's used in a single sentence to deliver our emotions. When we deliver our emotion, we say I feel blue, which means sadness. And if we say the blue, blue sky, so when the word blue is attached with the word sky, it shows a more positive image. Yesterday you told me, told सेकेंड फॉर्म है टेल की, अबाउट दी ब्लू ब्लू स्काई। मैडम ने जैसे बताया कि ब्लू अबाउट का मतलब होता है के बारे में, जैसा कि हम आपको कल्चर कॉन्टेक्स्ट के साथ बता रहे हैं। और ये जो है चूँकि ये बाहर के अमेरिका की ऑथर्स हैं और उनकी लिखी हुई पोइम्स हैं, तो उनमें उनका वो ब्लू कलर को जब लेते हैं तो वो सैडनेस को मार करते हैं और सैडनेस की बात करते हैं। लेकिन जब ब्लू स्काई आ जाए तो वो फिर उसकी हैप्पीनेस को शो करते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मुझे जो है मैं बहुत खुश था कि आपने मुझे पहले जो है बहुत अच्छे बताए थे, बड़ी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी ख्वाब दिखाए थे, और मुझे तो बड़ा ब्लू ब्लू स्काई नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा मैं फील कर रहा था। फीलिंग्स basically blue sky refers to the clear sky when there are no clouds. और जब मैंने देखा तो फिर कुछ भी नहीं था, येलो ट्री आ गया, येलो लेमन ट्री, यानी येलो लेमन, यानी लेमन के साथ भी उन्होंने येलो का कलर यूज़ किया कि बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस, जो लीफ ड्राइनेस और जो होता है लेमन को ड्राइनेस के उसके पर ला रखे, यानी कुछ ही नहीं मुझे मिला। Exactly. And then he says that I'm turning to my head round and round, which means he's very confused, he's perplexed, his situation, and then he has repeated the word turning, 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 turning around. And whenever a writer repeats such words, this means that they are trying to indicate their thoughts that are tangled together. So he's saying that he's so confused that he's turning his head around. Like when you get confused, so our head just goes like this. So it's just like that, right? And all I can see is just another lemon tree. Again, he's saying that I see no hopes, and my life just throws some problems at me. And as I mentioned before, that when life gives you lemon, make a lemonade. ओके, देखिए आप यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है कि मैंने अपने जो सर है उसको यहाँ अप एंड डाउन किया और टर्न अराउंड इस तरह करते हैं, टर्निंग अराउंड, यानी इधर उधर देख रहा हूँ, मैं अपने सर को घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, और मुझे जो है वो कुछ भी नहीं मिला। एंड दैट ऑल आई कैन सी इज़ जस्ट अनदर, और फिर मुझे कुछ भी नहीं मिला, और फिर वही लेमन ट्री, यानी कि फिर मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मुझे कोई ख़ास पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं मिली। तो सब मेरी यानी कि मेरी
मेरे उसका धोखा ही है, जो है मुझे कोई पॉजिटिव नहीं मिला बल्कि मुझे नेगेटिव ही है, यानी मेरे लिए कुछ नहीं है। So you see there were a number of preposition in it as well. The word about is a preposition. Then down and up and down both are prepositional words. Then we studied that round is also a prepositional word. Now comes the turn of the fourth stanza, so listen to it. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. The first stanza talks about the condition of the narrator at the moment of his speaking. He says that I'm sitting here and I miss the power. So basically when you are depressed, when one is depressed, so what happens is that your energy is completely drained out. You cannot do something and you lose the power. So basically he's referring to his feelings at that moment, and he wants to go out, he wants to take a shower, but he does not have the enough energy to go and take a shower, and there's a heavy cloud inside my head. Heavy cloud. The word heavy cloud is basically a metaphor over here, we can say, and it is referring to when your thoughts are too much dulled and you feel like there's something pressure upon your head. So we say that, oh my God, it feels like something is upon my head. Or when a very common idiom is used, I feel like the burden is lifted from my shoulders. मेरे ऊपर से ज़िम्मेदारियों का बोझ उतर गया है. The burden is lifted from my shoulders. Yeah, so basically heavy cloud is when your thoughts are too much occupied and they are pressurized by the depression. Yes, इसमें जो है वो अपनी मोस्ट डिप्रेशन की फीलिंग्स बयान कर रहा है और उसकी वजह से बता रहा है कि मुझे बड़ी लथार्जी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है और एनर्जी जो है मेरी वो कम होती जा रही है. और जैसे मैंने बोला कि भारी सर होना, जैसे हम कहते हैं हमारा सर भारी हो रहा है. सो जब जैसे कोई गम या कोई हमें जब हम होता है ख़ास तौर पर तो हमारा सर भारी होने लगता है, यानी हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमें सर पे ना वो बोझ सा महसूस होता है. और दूसरी बात है कि वो चाहता है कि मैं अपने इस डिप्रेशन से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जहन में गम के बादल छाए हुए हैं और मैं उनसे नडाल हूँ और मुझे लथार्जी फील हो रही है. अभी जो है इसमें यूज़ हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस. आई एम सिटिंग है और उसने दोबारा बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यानी अभी वो कहीं बता रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कोई ऐसे पॉजिटिव नहीं काम कर पा रहा हूँ. और फिर वो कहता है जैसे हम गो आउट, यहाँ पे उन्होंने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है टू लीव योर होम हाउस टू गो टू सोशल इवेंट. तो वो कह रहा है कि यानी मैं कोई भी काम जो सोशल है, लोगों के साथ मिलना जुलना चाहता हूँ, तो उसके लिए गो आउट जो है व्हाट है फ्रेजल वर्ब है और ये आपके प्रपोजिशन में भी आता है. गो आउट, आउट इज द प्रपोजिशन. यस, बट देयर लेकिन उनके इनसाइड माइंड में इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो करेक्टर है वो उसके पास बहुत ही अनप्लेजेंट जो मैंने बताया ना. Okay. Then he says, I feel so tired. So basically he has done nothing, but because of the depression he feels tired. And then he says
that I want to put myself into bed. Okay, a lot of Pakistani students that I'm teaching in my institute, they tend to ask me the question that why do we say into bed when we lay on the bed? So basically, it's again referring to the culture. In America and foreigns, they usually put the quilt, spread it on the bed, even in the morning when they leave for work. Whereas in Pakistan, what we do is that we fold all the blankets and we have a chair or a separate table upon which we pile them up. But in the foreign countries, they either have sleeping bags or they spread the quilt. Like usually in our 5-star hotels, if you book a room in a 5-star hotel, or even if you go to Murray and these northern areas, so you will see that your blankets would be spreaded across the bed in these hotels. So therefore, the word into bed is used because when they lay on that bed, they crawl into that blanket. So into means going inside of it. And then he says that nothing ever happens because his beloved is not coming, she is long gone, and he's still wondering why. जी, इसमें मैडम ये कहना चाह रही हैं कि जो बेड होते हैं वो इस तरीके से बना होता है फ़ॉरन में कि वो जो बेड है उसके ऊपर ही कंबल वगैरह और हाफ उसमें लगाया होता है उन्होंने, और उसको कहते हैं बिस्तर लगा देना, तो वो लगाया होता है उन्होंने, उसके लिए यूज़ होता है इनटू बेड जी। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं महसूस हुआ, कुछ भी नहीं। Last stanza talks about that isolation is not good for me. So isolation, we all are very much aware of this word by now because of COVID-19. Yes. Everyone is telling you that be isolated. If you get the virus, so stay isolated and all that. So isolation basically means to stay away and to stay in a lonely state and where you cannot interact with anyone. So he says that isolation is not good for me. So basically, here he's talking about that because of depression, he has cut himself off from the people, but this state of loneliness is not good for him. And then he talks about that I don't want to sit in another lemon tree, like he does not want life to throw lemons on it, but rather he wants to make the lemonade, so he wants to go away from it and he wants to go in the desert joy. ये बता रहे हैं कि आइसोलेशन का मतलब हो कि अकेला होना, तो अकेले होने की जो स्टेट होती है उसको कहते हैं आइसोलेशन। लेकिन यहाँ शायर कहता है कि आइसोलेशन होना मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे मैं और डिप्रेशन में जाता रहूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं जो है एक्सट्रीमली जो मेरी थॉट्स हैं उसमें वो मुझे सुसाइड की तरफ ले जा सकती हैं, और लेकिन मैं तन्हाई में नहीं बैठना चाहता। और यहाँ पे लेमन ट्री से मुराद उसने ली है कि मैं किसी भी गम में मुब्तला नहीं होना चाहता, मैं किसी भी गम में फंसना नहीं चाहता, मैं अपने गमों के साथ खुश हूँ। इसमें ये लिखते हैं आई एम स्टेपिंग, तो आई एम स्टेपिंग अ डेजर्ट, तो डेजर्ट का डेजर्ट जॉय। अब ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। A desert joy means that, one is dessert, that is a sweet dish, and one is desert. Desert means that when the area is dry and sandy, like you have the Sahara desert. So same is for that desert. Desert is actually used as a symbol of roughness, when life is not okay, when you have hardships, so we refer to desert because there is no water, there is no hope for life. And joy is actually happiness. So he says, I'm stepping into a desert joy. I mean that his life is completely barren, but he is gaining that joy. And people go to desert, they travel to deserted areas for adventures. So basically he wants to go for desert joy. And then in the end he says that I'll get another toy. So another toy, the word another toy is actually referring to a lady, and he is saying that because his lover played with his feelings, so he'll get another toy, meaning that he'll get another girl and he will play upon that girl. He won't be serious with her and everything will happen, meaning that their relationship, that he will start off his relationship with the new girl and his ex then will wonder that why and how it happened. So he's just trying to show a more optimistic approach, and he's trying to convey the message to his lover that before in the start I was crying after you, but now I'm going to get another girl, I'm going to enjoy my life, and you are going to wonder why. जी, जैसे कि मैडम ने बताया कि डेज़र्ट, तो डेज़र्ट से मुराद है सेरा होना, लेकिन कहता है अब मैं खुश हूँ, मेरे में ऐसे अभी मैंने अपनी फीलिंग को ऐसा चेंज कर दी है, और मैंने जो है अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक दूसरी जो है लवर के जो है अपनी लवर के को तलाश करूँ, मुझे दूसरी लवर मिल जाएगी, मैं जीतू कि दूसरी लवर मिल जाएगी और मेरी लाइफ जो सेटल हो जाएगी। आप ये जो यूज़ करें वो अपनी लवर के लिए यूज़ करें मैडम। और वो कहता है कि it is referring to the ancient girlfriend. वो
अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को रेफ़र कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम फिर सोचोगी कि अब तुम फिर हैरान होगी, तुम फिर सोचोगी कि क्या हुआ. Exactly. So this was a very fun and enjoyable Yeah. video. Yes. I hope you guys liked it. Yes मैम, आई वांट टू से समथिंग दैट ये जो है शुरू में नेगेटिव ही थॉट्स जो होते हैं वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ लाना चाहिए और हमें भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहिए. एक जुमला वर्ड यूज़ होता है हमारे यहाँ, तुम ना सही तो और सही, और नहीं तो कोई और सही. So viewers, there's a special announcement. We are attaching our worksheet with it, and we have decided that we should be more interactive and our audience should enjoy us. So there's a worksheet that is you can see on the screen. You need to take a screenshot of this worksheet, fill in the blanks, which are the prepositions, and send us back on the WhatsApp number 0335820036 or email me on marofmehmood921@gmail.com. And those who get the one who got all the answers correct will get a reward from our side. यस मैम. इसमें मैम ये जो है आपको वर्कशीट आई हुई है, मैडम ये कहना चाह रही हैं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे. स्क्रीनशॉट लेकर ये हमें फिल करके भिजवाए और हमसे पाइएगा गिफ्ट. तो जो जितने भी लोग भिजवाएंगे हमसे वो पाएंगे बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट. तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. I hope you liked this video and you enjoyed the song. And please let us know in the comment section that what is your mode of escapism, and tell us your favorite song and we will make a video over it. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.